Dear students, welcome to NEET Direct program, Gravitation Day 1. First of all, we'll take up the examples in NCERT. Here, the question is, a planet is moving around the sun and perihelion is P. This point P is perihelion. Perihelion means the distance closest to the sun. And another point A is aphelion, that is the farthest distance from the sun. And the question is whether the planet will take equal time to traverse this yellow region or the green region. Yellow region in the question is mentioned as BAC. So this is BAC region, right? And the green region is mentioned as CPB in this question. So I repeat, the question is very straight and simple. You have to tell whether the time taken to cover this or to sweep this yellow area and the green area is same or different. As you can see, the greener area is smaller than the yellow area, right? Therefore, as per Kepler's second law, equal areas are swept in equal intervals of time. Conversely, it means unequal areas are swept in unequal intervals of time. The answer is straight no. And as you can see, this yellow area is larger than the green area. Therefore, the distance BAC, this will be a longer time. This distance will be covered in longer time than CPB, right? Now we move on to question 7.2. Here in this diagram, three masses are there, M, M, and M. These are equal masses placed on the vertices of an equilateral triangle. And there is a mass 2M lying at its centroid. This question has two parts. The first part is, what is the force acting on mass 2M placed at the centroid? Well, as you can see, this particle of mass 2m is being attracted by this m, and this m. These three masses are attracting it in three different directions. And these three distances are also equal. Since these three masses are equal, they exert equal force on particle at the centroid. So the net effect will be zero. So A part says what's the net force? That is zero. And now the second part of the problem is, what is the force if the mass at the vertex A is doubled? At this location, if you put a mass 2m, what will happen now? Just a few minutes ago, I told you if masses at every location are equal, that is m, m, and m, then from the symmetry of the figure, it is clear the net force on this 2m will be 0. But the second part says that you have to place a mass 2m at location A. What will happen now? Obviously, there is no more symmetry in the problem now because you have placed a different mass at location A. Therefore, the question will change now, right? First of all, let us find the force between A and G, right? So, force between A and G, we can write this way: force between A and G. Put the universal law of gravitation. You have m1 m2 divided by 1 square, because the distance is 1, it's given. Okay, so it is 4m square g. This is force between A and G. Now similarly, we can find the force between G and B, whereas G and C also will have the same value. Why? Because here the mass is 2m, here is m. There is 2m, there is m. So between these two pairs, the force between these two
and these two will be same, right? Therefore, I can write here now, force between B and G will be same as force between C and G, and each one is equal to G capital 2m m by 1 square, that is 2m square G. From this diagram, you can see that all the three angles are 120. That means this angle is 60. This angle is also 60 degree. All right. Therefore, we'll resolve these two forces into components. Force, this one has component here as FBG cos 60. And this thing is same as force CG cos 60. Right? बेटा इसको एक बार फिर से देख लीजिए व्हाट आई जस्ट सेड, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल जो बनता है यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच इसके, ये कितना बन रहा है 120, आधा कितना हो गया 60। इस फोर्स का ये कॉस कंपोनेंट है, राइट, और इस फोर्स का भी यही कॉस कंपोनेंट है। तो इन दोनों इक्वल फोर्सेस के कॉस कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन CG cos 60। CG मीन्स इस फोर्स का कॉस कंपोनेंट, और यहां लिखा मैंने BG cos 60, यानी इन दो का कॉस कंपोनेंट। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। तो हम ऐसा करने वाले हैं, नेट फोर्स एट G वो होगा पहले ऊपर वाला फोर्स जो ऊपर जा रहा है 4m स्क्वायर G, उसमें से माइनस होंगे ये दोनों कॉस कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें हर एक कंपोनेंट का बेसिक वैल्यू यही है 2m स्क्वायर G, ये दो बार आ रहा है ना, इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 60, एंड यू नो कॉस 60 मीन्स 1/2, सो इट गेट सिंप्लीफाइड, ऐसे आएगा 4m स्क्वायर G इंटू 1/2, राइट। अब इस 1/2 को हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन गया 4m स्क्वायर G माइनस 2m square G, that means 2m square G. This is the force in which direction? Along GA. So यहाँ लिख देते हैं हम along GA. This is answer to this particular question, right? तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L। यानी ये जो डायग्राम है इसकी हर साइड L है, राइट, और इसके वर्टिसेस पे ये M 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। यू हैव टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बड़े यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इन जब चारों को पास पास रखा जाता है तो नॉट ओनली दीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक पेयर, दूसरा पेयर, चौथा, तीसरा, चौथा, है ना, ये पेयर्स, इसके अलावा दो पेयर्स और भी हैं, एंड दिस द डायगोनल पेयर्स, ये भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। सो ओवरऑल हमारे पास 6 पार्टिकल्स का इंटरेक्शन बनता है यहाँ पे। सबसे पहले इन चारों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी will be well negative. Why? Because attractive forces cause negative potential energy, और ग्रेविटी की फोर्स अट्रैक्टिव है इसलिए वो नेगेटिव आएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास रहता है नेगेटिव G टाइम्स M1 M2 बाई R, लिखते हैं यहाँ पे L लिखेंगे, राइट, ये बिकॉज डिस्टेंस यहाँ पे L है। ठीक, ये रहा हमारे पास एक सिंगल पेयर के लिए, इसके और इसके लिए। अब दूसरा पेयर मीन्स ये और ये, फिर तीसरा पेयर मीन्स ये और ये, चौथा पेयर ये, सबका आइडेंटिकल वैल्यू आएगा, इसलिए सिंपली आप इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑलराइट, ये हो गया हमारे पास कॉर्नर्स वाले चारों का पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। अब इसमें हम ऐड करेंगे और वो भी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो लिख रहे हैं प्लस, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं नेगेटिव आएगा, सो दिस शुड बी रिटन नेगेटिव माइनस, राइट।
वो है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द डायगनली प्लेस्ड मासेस। ये रहेगा जी m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस ओनली, नो स्क्वायर्स। और ये हमें बताया गया है कि एल है एक साइड, ठीक, तो बीच डायगोनल क्या होता है, एल रूट टू। अब चेक कर सकते हैं इस शेडेड वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस हम लगा के, इफ द परपेंडिकुलर एंड बेस आर एल, द हाइपोटेन्यूज विल बी L रूट टू। दिस वॉट हैव रिटन हियर। और ये एक पेयर के लिए, बिकॉज हमारे पास दो पेयर्स हैं, इनटू टू भी कर लीजिए। करो सिंप्लीफाई, इट बिकम्स नाउ माइनस जी एम स्क्वेयर बाई एन। इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा। ये जी एम स्क्वेयर एल इसके पास भी है, जी एम स्क्वेयर एल इसके पास भी है, इनको कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा होगा हमारे पास, फोर और 2 by root 2, ठीक है, and that can be simplified to 4 plus root 2। and when you say 4 plus root 2, you get the value 4 plus 1.414. This when simplified, 5.414 gm squared by L. This is the potential energy of these four particles. All right. तो बेटा इस क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है आल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी यहाँ पे एज यू कैन सी ये पूरा डिस्टेंस जो है इट इज एल रूट टू, ठीक है ना, बिकॉज ये भी एल है ये भी एल है। एंड नाउ हम इसकी बात करें सेंटर की, तो एल रूट टू का हाफ हो जाएगा ये डिस्टेंस, दैट इज ये डिस्टेंस जो है जिसे आर कहा गया है, ये एल रूट टू का हाफ, दैट इज एल बाई रूट टू, ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा। और एक दो तीन चार, इन चारों पार्टिकल्स के लिए डिस्टेंस एल अपॉन रूट टू ही रहेगा। ओके, सो हम यहाँ पे ये लिखते हैं पोटेंशियल वी, बिकॉज ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा ये, जी एम वन एम टू, बिकॉज पोटेंशियल है तो यूनिट मास के लिए मेजर होता है, एम वन एम टू बाई डिस्टेंस एल रूट टू, एंड यू सिंप्लीफाइड फर्दर, इट बिकम्स जी एम रूट टू डिवाइड बाई एल। ये है एक पेयर के लिए, लेकिन हम हमारे पास तो फोर हैं, 1 2 3 4, इसलिए थ्रू आउट इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, बिकॉज चार बार ऐड करना मीन्स 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो। सो इट बिकम्स नाउ 4 रूट टू जी एम डिवाइड बाई एल। सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से हमने नीट डायरेक्ट प्रोग्राम में ग्रेविटेशन के डे वन की फर्स्ट 3 सॉल्व प्रॉब्लम्स कर ली हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।